Hello everyone. Today in this class we are starting exercise 3D, which is directly based on the conversions which you have studied in the previous video. Now let's start with the questions of this exercise. First question is convert 4.8 hectogram to the centigram. Here we don't know the relation between hectogram and centigram, so we will call our friend. कहाँ है दोस्त मेरा दोस्त से मिलो. Basic unit is gram here, right? So the middle term will be gram, right? Gram here, right? So this is kilogram, hectogram, DA, decagram, decigram, centigram, milligram. You are on hectogram because the given unit is hectogram. And you want to convert it into the centigram. You are moving forward, so you will multiply with which number? 1, 0, 0, 0, 0. That means 10,000. So from here you know that 1 hectogram is equals to 10,000 centigram. 4.8 hectogram is equals to, you are going to multiply, so multiply them. 4.8 multiply 10,000 centigram. Now this will become centigram. Clear? When you multiply the power of 10, what do you do in decimal numbers? Mr. DL के according you will shift the decimal to the right. जब आप पावर ऑफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप डेसिमल को कितने प्लेसेस शिफ्ट करेंगे? 1, 2, 3, 4 प्लेसेस शिफ्ट करेंगे टू दी राइट. सो 1, 2, 3, 4. नाउ डेसिमल विल बी हियर. सो दिस इज 48000 centigram. Clear? At the end you have decimal, so it doesn't have any value. So this is equals to 48,000, which is your answer, 48,000 centigram. Next question is, this is given in deciliter. This is DL. अगर DA होता तो क्या होता? Decaliter. But this is deciliter and you want to convert it into the centiliter. Call your friend. कहाँ है दोस्त मेरा दोस्त से मिलो. Common term is liter. Basic unit is liter here. So mid term will be liter. Put liter here. Now kiloliter, hectoliter, decaliter, liter, deciliter, centiliter, milliliter. This is given in deciliter and you want to convert it into the centiliter. Moving forward, so multiply by 10. Clear? So 1 deciliter is equals to 10 centiliter. 28.35 deciliter you are going to multiply. So multiply it. 28.35 multiply 10 centiliter. Now your answer will be in centiliter. Clear? So move decimal 1 place to the right according to Mr. DL. It becomes 283.5 centiliter. This is your final answer. Now the next question is 29.83 hectometer to the meter. Clear? So call your friend. कहाँ है दोस्त मेरा दोस्त से मिलो. Meter is common here, so middle term will be meter. This is kilometer, hectometer, decameter, DAM, meter, decimeter, centimeter, millimeter. This number is given in hectometer here and you want to convert it into the meters. You are moving forward, so you will multiply with 100. So from here this is clear that 1 hectometer is equals to 100 meters. 29.83 hectometer is equals to 29.83 multiply by, you will multiply by 100 and then it will become meter. Clear? Now in multiplication according to Mr. DL, when you multiply the power of 10, you shift the decimal point to the right. Clear? How many places? 2 places. 1, 2. So it will become now 2983 decimal meter. Decimal point is at the end, so it doesn't have any value.
So this is equals to 2983 meters, which is your answer. Next one, this is given in decagram, DAG, and you want to convert it into the kilogram. So call your friend, कहाँ है दोस्त मेरा, दोस्त से मिलो. Gram is common here, so middle term will be gram. So replace it by the gram. Clear? Now it becomes kilogram, hectogram, decagram, gram, decigram, centigram, milligram. This is decagram and you want to convert it into the kilogram. You are moving backward. वापस आ रहे हैं. So you will divide. By which number? 100. और divide का मतलब क्या होता है? 1/100. Now it will be 1/100. Clear? So 1 decagram is equals to 1/100 kilogram. Right? 32.48 decagram is equals to 32.48 upon 100 kilogram. According to Mr. DL, when you divide by the power of 10, decimal point shift to the left. कितने places left shift होगा? 2 places, because in denominator you have 2 zeros. 1, 2. Decimal point will shift to this point. So it will become 0.3248 kilogram. And before decimal there is nothing, so you can put 0. Clear? So your answer is 0.3248 kilogram. Next question number 2. Convert this 46 meter 18 centimeter to centimeter. सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है. स्टूडेंट्स, दिस इज ऑलरेडी इन सेंटीमीटर. सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने की नीड ही नहीं है. सो यू विल ऐड इट एट द एंड. आप इसको एंड में ऐड कर देंगे. सिंपली यू विल कन्वर्ट दिस मीटर इनटू द सेंटीमीटर. नो नीड टू कॉल फ्रेंड को कॉल करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये सबको पता है 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर. ठीक है, फ्रेंड की हेल्प लेनी ही क्यों है अगर आपको ऑलरेडी पता है. तो 46 मीटर इज इक्वल्स टू 46 मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर. 46 1s are 46, 0 centimeter. Now what will you do? You will add this 18 centimeter. इस 18 centimeter को add कर देंगे. It becomes 4618 centimeter. This will be your answer. Right? Next one. Convert this 3749 meter to the kilometer and the meter. अब 2 यूनिट्स में कन्वर्ट करना है, तो आप 2 यूनिट्स चेक ना करके फर्स्ट वाली यूनिट चेक करो. किस में कन्वर्ट करना है? किलोमीटर्स में. मीटर में गिवन है, किलोमीटर्स में कन्वर्ट करना है. क्लियर? नाउ आपको ऑलरेडी पता है 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1/1000 किलोमीटर. इफ़ इन केस आपको नहीं पता, यू कैन कॉल योर फ्रेंड, कहाँ है दोस्त मेरा, दोस्त से मिलो. किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर. दिस इज गिवन इन मीटर्स. मीटर्स में गिवन है एंड यू वांट टू कन्वर्ट इट इनटू द किलोमीटर्स. यू आर कमिंग बैकवर्ड, सो दिस इज डिवीजन. वापस आ रहे हैं तो क्या होगा? डिवीजन. With which number? 1000 by 1000. So from here this is clear that 1 meter is equals to 1/1000 kilometers. 3749 meters is equals to 3749 upon 1000 kilometers. Now you are dividing by 1000, so you will put decimal before 3 digit, because in denominator you have 3 zeros. 1 2 3. Decimal will be here, so this will become 3.749 kilometers. It means ये 3 क्या है? किलोमीटर, and this 749 is meters. Clear? So this is your answer. Next one, convert centiliter to liter and centiliter.
सेंटीलीटर को कन्वर्ट करना है लीटर इन सेंटीलीटर में, 2 यूनिट्स गिवन है कन्वर्ट करने के लिए। सो फर्स्ट वाली चेक करो, सेंटीलीटर को लीटर्स में कन्वर्ट करते हैं, क्लियर। सो कॉल योर फ्रेंड, कहाँ है दोस्त मेरा, दोस्त से मिलो। लीटर इज द बेसिक यूनिट, सो रिप्लेस द मिडल मीटर बाय द लीटर। नाउ दिस बिकम्स किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर, क्लियर। This is given in centiliter. Where is centiliter? Here. And you want to convert it into the liters. You are moving backward. So it will be division. By which number? 1, 0, 0. 100. So 1, this unit, centiliter, is equals to 1 upon 100. This unit in which you are converting liter. Right? 349 centiliter is equals to 349 upon 100 liters. In denominator you have 2 zeros. So put decimal before 2 digits. This will become 3.49 liters. It means 3 is in liters and 49 is in centiliters. Clear? This is your answer. Now the question number 3 is, the Mariana Trench is about 10,900 meter deep in the Pacific Ocean. Is this greater or less than the 8.85 kilometers height of Mount Everest? They are just asking, is it greater or the smaller than the Mount Everest? So Mariana Trench की height कितने given है? This is 10,900 meters, clear? And the height of Mount Everest is given 8.85 kilometers. Students, firstly, before comparing, make sure their units should be same. यहाँ पर क्या given है? meters. यहाँ पर क्या given है? kilometers. Before comparison, make their units same. इनकी units को क्या बना देते हैं? same बना देते हैं. आपकी मर्जी, आप इसको meters में convert करना चाहते हैं या इसको kilometers में, up to you, right? I am converting the first one. So I know 1 meter is equals to 1 upon 1000 kilometers. 10,900 meters is equals to 10,900 upon 1000 kilometers. In denominator you have 3 zeros, so you will put decimal before 3 digits. 1, 2, 3. So decimal will be here. This will become 10.900 kilometers, right? So right here 10.900 kilometers. This is 8.85 kilometers. Now compare them. While comparing the decimal numbers, what do you compare first? You compare the whole number, or we can say integral part. Integral part is 10 here. That means the part which is before the decimal, and here is 8. Which one is greater? Of course this one is greater. So Mariana Trench is greater. Write here your answer. Mariana Trench is greater. Next question. The thickness of 54 sheets of paper is 15.12 millimeter. 54 sheets का thickness given है 15.12 millimeters. What is the thickness of each sheet in centimeters? क्या बोला है? 54 शीट्स का गिवन है एंड 1 शीट का पूछ रहे हैं. आपको पहले से ही पता है, when they ask from more to 1, you divide 1 to more, multiply. 1 से अगर ज़्यादा का पूछा जाए multiply, ज़्यादा से अगर 1 का पूछा जाए तो divide. Clear? So here you will divide this 15.12 millimeter by the number of sheets. Number of sheets कितने थे? 54. So पहले हम क्या कर रहे हैं? 1 sheet of paper का thickness निकाल रहे हैं. So divide it. Divide by 54. 15.12. 2 digits are there. So firstly you will take 2 digits. 54 zeros are 0, 0. Subtracted 15. Now you have decimal. Put decimal point here. Copy down the next digit 1. 54 twos are 108. Subtract it. This is 43. Copy down the next digit
2 8s are 432. So thickness of one sheet is 0.28, but this is in millimeter, right? They were asking in सेंटीमीटर्स. उन्होंने किस में पूछा है? सेंटीमीटर्स में पूछा है. So millimeter to centimeter you want to convert. We know that 1 centimeter is equals to 10 millimeter, right? So 1 millimeter should be 1/10 centimeter. And if you don't know, you can call your friend. कहाँ है दोस्त मेरा, दोस्त से मिलो. किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, millimeter. This is in millimeter. Millimeter is last one. You want to convert it into the centimeter. This one. So you will divide because you are moving backward by which number? 10. Clear? So 1 millimeter is equals to 1/10 centimeter. 0.28 millimeter is equals to 0.28/10 centimeter. Now in denominator you have 1 0. So shift the decimal one place to the left because according to DL, Mr. DL, डिवीजन के केस में डेसिमल पॉइंट कहाँ पर शिफ्ट होते हैं? लेफ्ट में. हियर. सो योर आंसर विल बी 0.028 सेंटीमीटर और यू कैन राइट 0.028 सेंटीमीटर. क्लियर? दिस इज योर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. एन इंच कंटेन इतने सेंटीमीटर. उन्होंने बोल दिया 1 इंच किसके इक्वल है? 2.54 centimeter. Clear? How many centimeters will be there in 12.5 inches? 1 cm given है and they are asking for 12.5 inches. Clear? अभी आपको बताया था 1 to more का पूछे तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई. सो मल्टीप्लाई दिस value of 1 inch by the number of inches. So 1 inch is equals to 2.54 centimeter and multiplied by the number of inches which is 12.5. Firstly you will multiply both the numbers without decimal. That means 254 multiply 125. When you will multiply them you will get 31,750. At the end, this is in centimeter. At the end you will put the decimal. यही करते हैं ना डेसिमल्स में, पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं विदाउट डेसिमल, देन एट द एंड वी काउंट द डेसिमल प्लेसेस. हियर इन दिस वी हैव 2 decimal places, in this we have 1 decimal places. So after decimal how many digits should be there? 3. 1 2 3. So this will be 31.750 centimeter. Or in decimals, if you have 0 at the end, it doesn't have any value, it can also be equals to 31.75 centimeter, right? Next one, Gauri spends 0.75 of her salary every month. इतना क्या कर रही है? स्पेंड कर रही है. ठीक है. इफ शी अर्न्स इतने पर मंथ, मतलब उनकी मंथली सैलरी कितनी है? ₹12,000. नाउ मंथली सैलरी इतनी है और उन्होंने बोला है गौरी स्पेंड्स 0.75 ऑफ व्हाट? ऑफ हर सैलरी. और सैलरी कितनी है? ऑफ ₹12,000. सैलरी 12,000 ही है ना, राइट? सो फर्स्टली वी विल कैलकुलेट दिस पार्ट. कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप 0.75 को कैसे लिख सकते हैं? पॉइंट रिमूव करो अपॉन 100 बिकॉज आफ्टर डेसिमल देयर आर 2 digits. मल्टीप्लाई ₹12,000. 0 to 0 cancel out, 0 to 0 cancel out. Now you will multiply 75 by ₹120 and what will you get? You will get ₹9,000. Clear? So from here this is clear that this is equals to ₹9,000. Gauri spends in 1 month ₹9,000. अगर हमें टोटल इनकम पता है मंथ की, स्पेंड पता है मंथ का, अगर मुझे पता है आपकी मम्मा पॉकेट मनी आपको 10 रुपीज़ देती है और आप 6 रुपीज़ स्पेंड कर देते हैं, हाउ मच मनी डू यू सेव? 4 रुपीज़ ना.
क्या किया आपने, टोटल मनी में से जो आपने स्पेंड किया उसको सब्ट्रैक्ट किया। सिमिलर वी विल डू हियर, जो मंथली इनकम है 12,000, फ्रॉम दिस मनी यू विल सब्ट्रैक्ट द मनी विच यू हैव स्पेंट 9,000. So what do you get? How much money do you save? This is equals to rupees 3,000. 3,000 सेव कर रहा है. Clear? Next they were asking in how many months will she save 39,000. मतलब एक मंथ में इतना सेव कर रहे हैं 3,000 में, कितने मंथ में 39,000 सेव करेंगे. If I ask you in one day you eat 2 chocolates, in how many days you will eat 10 chocolates? 5 days. How did you find it? Total chocolates को divide किया है by the number of chocolates which you have ate in the one day, right? Similar we will do here. हम क्या करेंगे, टोटल जो अमाउंट है उन्होंने सेव किया है उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ मंथ्स फाइंड आउट करने के लिए, विच इज़ 39,000 बाय द मनी सेव्ड in 1 month. Clear? 3,000. You can simply cancel out or you can divide. 0 to 0 cancel out, 0 to 0 cancel out, 0 to 0 cancel out, 3 ones are 3, 3 threes are 9, rupees to rupees cancel out. So what you are getting? 13. So in 13 months Gauri saves rupees 39,000. Next question, question number 7. How many jars each holding? Again they are asking by the number of jars. जब भी आपको number of tiles, number of jars, previous में भी आपको number of months पूछे थे, है ना, तो इन सब केसेस में आप क्या करेंगे, एंड में आप डिवाइड करते हैं. क्लियर स्टूडेंट्स? दिस इज 1.75 किलोग्राम, राइट? सो jam in each jar is 1.75 किलोग्राम. क्लियर? एक जार का गिवन है कि 1.75 किलोग्राम जैम आ जाता है. फर्स्टली चेंज इट इनटू द ग्राम. आपको सिंपली पता है 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम. 1.75 kilogram will be equals to 1.75 multiply 1000 gram. When you multiply according to Mr. DL, मल्टीप्लाई में कहाँ पर शिफ्ट होता है डेसिमल? राइट. कितने प्लेसेस? 3 places. So this 1.75 in this number we will shift the decimal 3 places to the right. 1, 2, 3. Decimal will shift to this place, right? So it will become 1750 gram. Clear? So this is equals to 1750 gram. Clear? Total jam can be filled from a vessel containing 100 kilogram of jam. एक वेसल है जिसमें 100 किलोग्राम ऑफ जैम है, उनको कितने जार में फिल कर सकते हैं? एक जार का गिवन है इतने ग्राम. क्लियर? सो वी कैन से दैट दिस इज द टोटल जैम. इसी को हमें जार में फिल करना है. सो टोटल जैम इज 100 किलोग्राम. एंड 100 किलोग्राम को जब आप ग्राम्स में चेंज करेंगे यू विल मल्टीप्लाई बाय 1000. इट मीन्स 3 zeros और ऐड हो जाएंगी. सो दिस विल बिकम 1 lakh gram. Clear? Now they are asking for the number of jars. So divide the total jam by the jam in each jar. Clear? So total jam is 1 lakh and you will divide it by 1750. So 1750 से डिवाइड करना है 1 लाख को, राइट? 1750 5 सा 8750. Subtract it 1250, right? Copy down the next zero, next digit. 7s are 1750, 7s are 12,250, right? Subtract it, what do you get? 250. So number of jars are 57. Number of jars 57. They were also asking how much remains. कितना जो जैम था वो रिमेनिंग है.
jam remains 250 gram. When you will convert it into the kilogram, it will become 0.250 kilogram, or you can say 0.25 kilogram, right? Why? Because when you will convert this 250 gram into the kilogram, you will divide by 1000. Divide by 1000 का मतलब क्या है? डिनोमिनेटर में 3 zeros हैं. So you will put decimal before 3 digits. 1, 2, 3. Decimal will put here. It will become 0.250. And as I said, there is nothing before the decimal. So you can put 0. And at the end, in the decimal part, if you have 0, it doesn't have any value. Right? So this is your answer. 57 jars and 0.25 kilogram jam is remaining. Students, in your answer sheet, this is given 0.025 kilogram, which is incorrect. वो incorrect है. This one is correct. Right? Now with this question, your exercise 3D and this chapter 3 is completed. Practice as much as possible. Thank you. Have a good day.